children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Reading Comprehension 2. Curious birds' nests. Among the most curious nests are those made by the birds called weavers. These feathered workmen serve no apprenticeship. Their trade comes to them by nature. And how well they work at it, but then you must admit that nature is a skillful teacher and birds are apt scholar. जो नेचर है वो क्या है? बेस्ट टीचर है, और जो बर्ड्स हैं वो एप्ट स्कॉलर है. द टेलर बर्ड ऑफ इंडिया makes a still more curious nest. It actually sews using its long, slender bill as a needle. Birds that fly, birds that run, birds that swim, and birds that sing are by no means rare, but birds that sew seem like the wonderful birds in the fairy tales. जो बर्ड्स गाना गाती हैं, तैरती हैं, वो रेयर नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन जो बर्ड्स स्विंग का काम करती हैं वो बर्ड्स रियली वंडरफुल हैं. येट दे रियली एग्जिस्ट एंड मेक देयर ऑड नेस्ट with great care and skill. They pick out a leaf large enough for their nest and pierce rows of holes along the edges with their sharp bill. Then, with the fiber of a plant or long thread of grass, they sew the leaf up into a bag. Sometimes it is necessary to sew two leaves together, that the space within may be large enough. वो बर्ड्स कैसे बनाती हैं अपना घोंसला? जगह जगह से जो है लीव्स या स्ट्रॉ को लेकर के फिर अपने बिल से उनको पियर्स करके और फिर उनको टाई अप करके अपना नेस्ट बनाती हैं. दिस काइंड ऑफ स्विंग रिजेंबल्स शू मेकर्स और सेडलर्स वर्क, बट द लीफ बीइंग लाइक फाइन क्लोथ एंड नॉट लाइक लेदर, परहैप्स द नेम टेलर बर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लिटिल वर्कर. ये जो काम है स्विंग का, ये शू मेकर या सेडलर जो काम करते हैं उससे रिजेंबल कर सकता है, लेकिन जो टेलर बर्ड का काम है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लिटिल वर्कर. द बैग इज लाइंड विथ सॉफ्ट डाउनी मटीरियल एंड इन दिस द टाइनी एग्स आर लेड टाइनी इंडीड, फॉर द टेलर बर्ड इज नो लार्जर देन द हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड की तरह से टेलर बर्ड उतनी बड़ी नहीं होती है, तो उनके जो एग्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं. The weight of the little creature doesn't even draw down the nest, and the leaf in which the eggs or young birds are hidden looks like the other leaves of the trees, so that there is nothing to attract the attention of the forest robbers. Another bird, called the Indian sparrow, makes her nest of grass woven cloth and shaped like a bottle. जो दूसरी बर्ड है स्पैरो, वो ग्रास से किस तरीके से बुन के बनाती है कि बाद में वो एक बॉटल की शेप का बनता है. द नेक ऑफ द बॉटल हैंग्स डाउनवर्ड्स एंड द बर्ड एंटर्स फ्रॉम बिलो. जो उसका फेस होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ, उसका नेक नीचे की तरफ होगा और नीचे से बर्ड जो है उसमें एंटर करती है. दिस स्ट्रक्चर स्विंगिंग फ्रॉम अ हाई ट्री ओवर अ रिवर is safe from the visits of mischievous animals. और इसका जो जिस ढंग से ये बनी होती है हाई ट्री के ऊपर जो है नीचे की तरफ जैसे बनी होती है, तो जो मिस्चीवियस एनिमल्स होते हैं उनसे ये सेफ होती है. इज इट एनी वंडर देन दैट बर्ड्स एंड देयर नेस्ट हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ डिलाइट टू थिंकिंग मैन. With no tools but their tiny feet and sharp little bills, these feathered songsters built their habitat more cunningly and artfully than any artisan could hope to do even after a long apprenticeship. इतने आर्टिस्टिकली ये लोग अपने नेस्ट को बनाते हैं
कि कोई एक्सपर्ट आर्टिजन भी उसको नहीं बना सकता। नाउ आई होप ये पैसेज आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।